Hey, good evening, everyone. So this might be either today or tomorrow will be our last session on the support, resistance, exponential moving average, and trends. So these four factors will decide almost like 80% of the thing. So remaining 20% having a weightage of 80%. I'm not saying that that's not having a weightage, but most of the time this 80% will be enough to take all the decision by the thumb rule. So if you are doing if you are having a long-term investor or mid-term investor, these things will be like 80% is done if you know these 4 or 5 things. So easy looks like it is, so how can it be so easy? But this will solve most of the problem. Only when the complication will start, then decision making will also become little difficult. But to refine that 80% to 100%, you have to know a lot more things that we are going to learn in future sessions. But up to here, I can say not 80%, then 70% we are through. If you know this much things, you will be able to judge. Now, I requested everyone to share the trend on different time frames. Why I asked to share the trend? So that when you are looking at a price now, you should know whether you are trending up, or stock is in the sideways trend, or stock is in the downward trend. So looking at the history, you will get to know when the stock was on the uptrend and started going in the sideways trend and started going in the downtrend. What is the purpose? Why I am asking you to share this, mark the patterns, mark the trend on the chart at a various time frame. Then you will realize at certain point when things are changing from trending up to sideways or trending down. You will mark something happening, right? How does road take the turn from the straight to left? Something is happening on that corner, right? Then it took the turn. So same way you should, when you'll mark the areas, you will realize how trends changes, and that will help you to gauge the stock right now, whether you are in cleared uptrend, or it is turning into sideways, or it is turning into downtrend. So one thing is bigger trends, then medium term trends like 5-year or weekly chart trend, and then there is a daily trend. So that's why it is important. And then there is a exponential moving average. Why I asked everyone to mark the area where exponential moving average is working, why it is taking the, whether it is taking the support or not. So first I will show what I was expecting from all of you, and then I will we will go through the each chart that you guys have shared and which needs some improvement that I will try to mark. Okay, so this is what I sent. Let's see why I said this area is trending upside. There were some downtrends in between, but this is a monthly chart. So on the monthly chart, stock was up on the 50 EMA line up to here, and all the lows are being made upside. All the lows, swing lows. See here, 1, 2, 3, 4, 5. Up to here, I can say stock was trending on the above the 50-month average, and it was making higher lows. Higher lows means every time the low is being made is above the previous low. So the stock is trending upside. Is it clear? We should know the definition. We should not only rely on our eyes, whether it is a trending up or it is a, now in between certain periods, like these areas, if somebody is only focusing on this particular area, he will say that 1 low, 2 low, 3 low. 3 lows are made on the same plane. So this particular area is sideways. Of course, on the longer time frame, when you divide the things into smaller scales, you will find different trends in between those patterns. But when I'm analyzing on the monthly time frame, I will see what is happening on the monthly time frame. So up to from here to here, it is uptrend. Now, why it is important? When you are here on, when you are working on current market price, you should know
Why I'm doing this exercise with the history? When you are looking here, you should know whether stock is trending upside on monthly chart or not. So you should take the clue from the history. Okay, it made low here, it made low here. Still the previous low, prices are above the previous low, so it is definitely trending upside. So that's why this exercise is important. Okay, now in this particular area, the one I'm seeing the price is bound by the range with the highs. Lot of highs are made in a same price range. I could have marked on the single line also, but to define the area, that this area, why I'm saying sideways? Any answer? Any one line answer? Because it is moving in one particular range. How do I know Of that it course, is a particular range? I can say this is a downtrend, this is uptrend, this is downtrend, this is uptrend. but I uptrend can is almost in one line. Downtrend we can draw the one line. So in the particular area, the whole scale is moving. So have one line answer that price is dissecting the exponential moving average up and down multiple times. So there is a clear indication of sideways trend. When your exponential moving average becomes flattish, your exponential moving average in this area is just like a horizontal line. Okay, so no need to see anything. Just your exponential. What is happening with the exponential moving average? Your average is flat here. Have a look. And here, Yes. just after the box, we are seeing some trend, upside trend here in this area. And the new trend has started. Your exponential moving average is going upside. So this is a trending upside. On the Darpanji, here monthly, also you can notice the trend pattern also. For example, there is no higher lows here or yeah, lower there is lows no here. higher lows, or there is no higher highs also. But Higher highs also. It's majorly single line, if I have to answer, I can see that price has crossed exponential moving average upside, downside multiple times. Once things happened 1, 2, 3 times means now you are in the sideways. Here itself, you can define that stock is in the sideways. sideways. Okay. Because now when it will cross multiple time upside, downside, what will happen? Exponential moving average will stop trending up. Now the prices are in the range, right? And this is the sideways trend. So easily you can now identify the sideways trend on all time frame. Here you are seeing the flattest line on monthly line. So you can say it's the sideways on monthly chart. Same thing will happen on weekly. Same thing happen on the daily. Same thing will happen on the hourly chart. In the minutes chart also. So you can simply, by looking at the exponential moving average, whether it is going up on the significant time, it is going up, you can say it is trending up. When it is going down, it is trending down. When it is flattish, just like a horizontal line, you can say it is sideways trend. Clear up to here? Yes. Any question on this particular chart? So simply, how could have you made this chart? Is this a clean chart or not? First of all, whatever I'm trying to uh, define or I'm trying to convey, whether it is clear or not. Everyone, I have a Darpanji, question. it's a clear. And one more point I want to add it here. So whenever you give the advices, no, you mentioned the price is you can target price is this much. How to set the target price here by the trends? That can be let's covered. not talk about that one, sir. We will discuss. We will discuss that one. Okay. Okay. Yeah. Let's focus on what I'm trying to convey here on today's session. Okay. Okay. Let's go with the how to set the chart once again for just 1 minute. Whenever I removed RSI volume because we have not studied it, I completely took the blank chart. With the indicator, I have only one indicator, exponential moving average. You go to the setting, define the 50 EMA color, define the 200 EMA color, make it bright so that you can visually
there is a contrast between the background and the prices. So take the colors which is different than your other background and your candles, so that you can easily differentiate a line that this is a 50 EMA and this is a 200 EMA, and keep this constant so that your eyes will be like synchronized with it. Now I set the chart on all time frame. Can you see the bottom side? All. I say when I'm doing on the monthly chart, I'm simply clicking this all time frame. Right side, set the auto button and start the log on. Why I started the log on? As you can see, price has been gone from 25 to 2,500. We already discussed that at a various time frame from 50 to 25 to 50, it will be double, right? 2x. It will be a journey of 2x. If I will not start on the log, this range you will feel like it is a flattish, but actually it is not, because the prices are changing from 10 to 20. It is a 2x journey, right? It is as good as journey from 1200 to 2400. So the prices here, you are seeing that it is zooming up. Actually, you are getting 2x only, right? 100% return from 1200 to 2400. But the back scale, the 10 to 20 is not that much visible here. Is it clear? Is this point is clear to everyone? So when you start the log, it divides the chart into the ratio. So now here you are seeing 1100 to 1500, but here you are seeing 10 to 13.5, 17.5, 23. Means now the scale is corrected against the previous prices. Now the growth here is same as growth here. So that's why whenever you are seeing, it's not just about a monthly. Whenever you are seeing good jump like 3x, 4x, even in the short period of time, turn the chart into log scale. Okay. Start the log. So now, till now, I have done all log and auto and started the exponential moving average. Chart will look like this. I have not changed anything, just auto, log, and all. Is it visually okay? Yes. Is it informative? It is clean. It's clean. You Very can clean. you can go on settings and define the background. Okay. On the appearances, you can define the background. I kept it darker tone so that my prices will be reflected just like a board. So I don't want any distraction from the background. And there is some gradient which will, so I'm keeping it at a minimum so that it is like a blackboard. Okay, so try to keep it simple. You can keep white or you can keep black. It's up to your choice. You can keep dual color also if you like. But the thing is, appearance is for, it is just for the information, right? So the cleaner you will keep, the better will be for future reading. So try to keep contrast, give the brightness, adjust the colors, so that it will be visually pleasing for next time. So up to here, when I set the chart on all time frame, auto and log, I have started looking on the trend. So trend, as I said, I will start looking on the lows being made on the monthly chart. And same time, I'm looking at the exponential moving average. So when the prices are above the exponential moving average, this is trend up. When the prices started dissecting the exponential moving average, this is a sideways trend. Once again, when price has started moving up, exponential moving is upward trend started. Now, here itself, somebody can say that trend is already started up. No need to see a whole picture. Why we can say up to here only? Again, when the trend will be up now, most of the time you will see the gap between the exponential moving average and the price. That's why, right? When the trend will immediately start, your average will not go immediately upside, right? We are talking about the average of 50 months. So when you see this, there is a gap, means something is already started happening. Now, you know up to which prices
it will be still sideways trend. You know that every time prices was returning from this particular price, say 600, up to 600, every time prices was coming down, right? But now this time prices crossed the 600 range, right? Am I right? Yes. This after this line, prices has first time crossed, right? After a long time, 2009 to 17. It was a long 8 years that prices has never crossed the 600. After this month itself, can we say that now there is a activity? Yes. So from here, it should we should catch the trend as early as possible. Okay. Now Yeah. up on the monthly chart frame, are we seeing any trend? Till here, all the prices were going upside, means all the lows were being made upside, right? Right. After this, there was some sideways appearances, even though there was a big fall in last year COVID period. Still, if you can see the lows of previous two trend, still prices were upside above this closing basis, right? Yes. Again, trend resumed and still trend is upside. So on monthly chart, we can say that the trend is still intact. The trend started here in 2015. I can say here, the last low, the prices are still moving upside. So this is the information I'm getting on the monthly chart frame. Stock is very bullish on the monthly chart frame. Green candles, it is in the green candles. Okay, now on the, I will zoom here and see monthly closing never happened above 2275. Agree? Monthly closing never happened above 2275. Is it correct or not? But Body we is can see still, one is, but we can see the one green is above the that resistance level. What you drawn the it line? was not closing, right? Oh yeah, It was not closing, right? it was not closing. Correct. Yes. So the first time whole complete month candle is above the previous closings, right? Yes. So there is a good chance it might fail. The whole complete month is there. Still, we are on the 3rd September. It might fail, and these complete things will look like a week at the end of the month. But that's the risk, right? That's the risk. So this 100 rupees is a risk. That and this whole complete 27 days is still left in the month is a risk. We don't know how it end up in the month, but initial stage, if we will identify that there is a good chance that new trend is emerging. This last week, last month closing was the highest closing on the closing basis. Look at this month closing. There was no Yeah. candle on the monthly closing was above 2275. Have a look. This closing was here only. The previous month's closing was the highest monthly closing. This closing, this was the opening. Closing was here, right? Red candle. So Yeah. this last month closing was the highest closing month. So on the monthly time frame, I'm now knowing the trend, monthly closing basis, what is happening on this particular month. So up to here, my conviction is that it is in the uptrend. New monthly candle is starting above the all previous highs. So this is a sign of positivity. I can take something out of this information. Now let's go to same chart on moving average once again. Moving average was giving supports up to when the trend was upside, and once it will not give the support, once first time it is not giving the support, here we should be cautious. Now trend can either go sideways or Come down. bearish also, can turn into Bearish negative also. side also. Why Negative. it is Yes. very important? It is important because when you learn, when you try to take some information here, it will be important. When the trend will go downside, now on monthly basis, when you can, up to what time you can say that trend is still positive? You can say last closing, all the lows
are 1800. So price is right now at 2300. Up to 1800, you cannot say that trend is negative on monthly chart, right? Till the time the prices are above the 2800, trend is still positive, right? Yes. So on somebody invested on monthly chart, this current price 2370, or you can say 2400 minus 1800, this 400 is your risk if somebody is investing now for longer time frame, because up to 1800 you cannot say that this stock is on the downside. So 400 rupees out of 2400, this portion is your risk if you are investing on the monthly time frame. Now you can go on the weekly time frame and can take the early exit, can take smaller stops. But is this point is clear to everyone? How to define the risk? Mahesh, Prakhar, Yes, yes, Richa, yes. you understand? Up to Yes, here, Darpan. up to 1800, you cannot say that it is downtrend, right? Because you know that trend is saying that every time lows will be upside. This is not a downtrend. Even below this is still below the previous low. So here also you cannot say basically, but at least stock will turn negative on the monthly candle basis. So at least you can take this price that now this is the base. So this is my ultimate stop loss for a monthly time frame. If you wait for EMA basis, EMA is further at 1500. So on the EMA basis, what is the risk right now? Yeah, this is 1568. So 1568 and 2388. So 800 Yeah. rupees risk is there, right? Yes, Even correct. if price Yeah. will fall on to 1500, it can bounce back, and still it will be in the uptrend, right? So on the If it gets exponential, supports at the 1500, it will bounce back. yes. So up to 1500, it's 868 also, you cannot say that stock is negative trend. It is still in the uptrend on a monthly chart basis. So now, Yeah. if somebody is taking decision on EMA, risk is 800 rupees. Because if you buy and tomorrow the price will start going down, up to what price you will not be sure whether the trend is over till the time exponential moving average is still intact on the monthly chart. Now I'm talking about monthly only, okay? We'll take quicker decision on weekly, daily chart, but on the longer time frame I'm talking about, if somebody is talking about 3-year, 5-year, 10-year plan, what will happen? You have to take the judgment on weekly time frame. Monthly time frame and 50 EMA basis. So is it clear that this was the risk? Yeah. Yes or no? Yes. Yes, Okay. So, Yeah. so this is two way to define the risk: previous lows, previous consolidation area, and exponential moving average. There are other factors that we'll learn, but up to now, all the decision will be based on trend, exponential moving average. Okay. So this 400 and 800 is risk factor when we invest here. So what we learned from this one, that we will try to invest as close to as moving average when immediately we identified that now trend is upside. Agree? Agree? How to minimize this agree. trend? Yeah. How to minimize this risk? रिस्क कैसे कम करें? अगर आप एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से इतना दूर लोगे तो 800 रुपए का रिस्क है. तो इस मूविंग यानी कि अगर हमने इस मूविंग एवरेज के पास में बाई किया होता तो क्या होता? हमारा रिस्क कम होता. जैसे ही हमने फॉल होते देखा और उठते देखा, और किसी को लॉन्ग टर्म पे पता है कि रिलायंस तो बहुत अच्छा है, ये तो हमेशा मूविंग एवरेज के ऊपर चलता है, इसका ट्रेंड अच्छा है, इसका बिजनेस अच्छा, तो अगर इस तरह के फॉल के बाद वो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे बाउंस ले रहा होता तो आप क्या करते? एंट्री करते इधर, यहाँ पे एंट्री करते. तो अभी आपको पता है कि लॉन्गर बड़े करेक्शंस आएंगे तो उस समय
जब आप पूछते हो कि अभी कौन से स्टॉक में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए अगर मार्केट में क्रैश आ जाए, तो आप अपने फेवरेट स्टॉक को ढूंढ लीजिए और उनको उनके मंथली टाइम एवरेज पे जब क्रैश आ जाएगा मार्केट में, यानी जब मार्केट कोविड पीरियड में क्रैश में थी तब भी ये 50-50 मंथ के एवरेज पे इसने स्टॉक को होल्ड किया है। कोई स्टॉक 200 पे होल्ड कर रहा होगा, बट इफ यू नो दैट दिस बिजनेस इज गुड एंड इट विल इंटैक्ट फॉर नेक्स्ट 5 year 10 year and it is related to external factor, always remember, was this price falling because of Reliance or because of some external factor? This is because of external factors. External It was factor. So unexpected. always, Yeah. अगर मार्केट ऊपर जा रही है, कोई स्टॉक गिर रहा है, तो वो 50 मंथ पे अपॉर्चुनिटी नहीं है, आप समझिए। उसके पहले उसके रीजन समझने की कोशिश करिए, क्यों गिर रहा है। पूरी मार्केट अगर ऊपर जा रही है तो ये स्टॉक क्यों गिर रहा है। तो कभी भी दो चीजें मिक्स नहीं करिए। देखिए, एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से गिर रहा है, पूरी मार्केट गिर रही है, तो दिस कुड बी अपॉर्चुनिटी। अब ये इस तरह से कोई देख सकता है कि ये सारी कंपनियों की हालत खराब हो जाती, अगर मान लीजिए कोविड का कोई इलाज नहीं निकलता, इमेजिन करिए, तो क्या हम जॉब कर रहे होते? अगर सब लोग इन्फेक्टेड होके डेथ हो रही होती तो ये तो सब कंपनी डूब जाती, राइट? फिर उस समय कोई कार खरीदने की सोचता क्या? आप इमेजिन करो। तो इस फैक्टर में तो ये सब कंपनी, फिर तो आपके रुपए की भी वैल्यू नहीं रहती, रुपया ही क्रैश कर जाता, मनी क्रैश कर जाती, वर्ल्ड इकोनॉमी ही क्रैश कर जाती, फिर तो गोल्ड की भी कोई वैल्यू नहीं रहेगी, राइट? सो इस पीरियड में जो हो रहा है वो सब कंपनी के साथ एक साथ हो रहा है, तो ये तो वर्ल्ड वाइड रिस्क है। तो उस रिस्क में अगर आपको लगता है, कोई भी फ्यूचर में कौन सा रिस्क आएगा, वी नेवर नो, हर बार कोई नया रिस्क आता है, कभी बैंकिंग फेल होता है, कभी कुछ फेल होता है, लेकिन अगर उस रिस्क के बीच में जब भी मार्केट क्रैश हो रही होगी और आपको पता है कि मेरे फेवरेट स्टॉक कौन से हैं या पिछले परफॉर्मर कौन से हैं, आगे ये बिजनेस खड़ा रह सकता है, उस रिस्क से, अब जो भी नया रिस्क आएगा अभी डिफाइन नहीं किया जा सकता, कौन सी वजह से दो कंट्रीज में वॉर हो जाएगी, वर्ल्ड वॉर हो जाएगी, वी डोंट नो, लेकिन उस पर्टिकुलर पिनेकल पे जब भी यहाँ पे निगेटिविटी सबसे ज्यादा रहती है, जब रिटर्न आना होता है ना, तो ये पहला जो ग्रीन कैंडल बनती है किसी को यकीन नहीं होता है, तो सबसे पहला ऑप्टिमिस्ट आदमी यहाँ बाई कर रहा होता है, कह रहे इससे कुछ नहीं होगा, हम बाहर आ जाएंगे। और जो निगेटिव आदमी होता है वो सबसे पहला निगेटिव आदमी होता है, वो यहीं पे सेल कर रहा होता है, उसको लगता है अरे रे ये तो नीचे जा रहा है, हो सकता है उसको कुछ सबसे पहले अंदेशा लग जाता है कि अरे चाइना में बैन हुआ, ये हुआ, वो हुआ, अभी मार्केट में सेल कर देने का टाइम। समझ रहे बात को? तो किसी भी ट्रेंड को अर्ली स्टेज में गेज करना है, चाहे वो सेलिंग के लिए करना है, चाहे वो बाइंग के लिए करना है। तो लॉन्ग टर्म पे बाइंग अपॉर्चुनिटी जब मिलेगी ना, तो आपको मार्केट पे यकीन नहीं बचेगा। आप हमेशा सोच लो, लास्ट मार्च में लोग जो है डूम्सडे की भविष्यवाणी कर रहे थे कि अब तो खत्म हो गई, मतलब दुनिया जो है डार्क एजेज में जा रही है, शेयर मार्केट में, इसलिए स्पेशली जो लोग शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं, क्योंकि 70-80% का फॉल 2 महीने में आ जाना, इट्स नॉट, आई एम नॉट सेइंग दैट कि वो लोग गलत थे, पर 90% लोगों की साइकोलॉजी यही बन जाएगी, क्योंकि आप यहाँ भी तो इन्वेस्टेड रहोगे, यहाँ तो अचानक से कैश तो नहीं आ जाएगा आपके पास। तो अगर आपने अर्ली स्टेजेज में सेल कर दिया सिग्नल समझ के, तो ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। आप टेक्निकल लर्न कर रहे हो इसीलिए कि अर्ली स्टेजेज में जब आप सेलिंग के डिसीजन, अर्ली स्टेजेज में आप बाइंग के डिसीजन ले लोगे, तो उससे आपका रिस्क कम रहेगा और ये जो लॉन्ग टर्म की अपॉर्चुनिटी है उसको आप यूटिलाइज कर पाओगे फिर। तो अगर कभी फ्यूचर में कोई क्रैश आता है और हम सही समय पर निकल जाते हैं, और जब तक बाई सिग्नल नहीं बनता है तब तक बाई नहीं करते हैं, तो क्या होगा, भले ही हम कैश में रहेंगे, लेकिन जब भी वो अपॉर्चुनिटी हमें मिलेगी उसमें ग्रोथ सडन मिलेगी, क्विक मिलेगी। एक साल में उतना ग्रोथ मिल गया जितना 5 साल 8 साल में मिलता, 4 साल 5 साल 6 साल में मिलता। आप यहाँ देख लीजिए प्राइसेस, 800,000 से 2300, 3 टाइम्स मिल गया। 3 टाइम्स रिटर्न हमको लेने के लिए बैंक में कितने साल इन्वेस्टेड रहना पड़ेगा, इमेजिन करिए। अगर 3 गुना बनाना है तो बैंक के कितने साल का रिटर्न 1 साल में मिला है, इमेजिन करिए। तो ऐसे स्टॉक्स जो अच्छी अपॉर्चुनिटी या मार्केट अच्छी अपॉर्चुनिटी देगी, अगर आप यहाँ 2 साल कैश में भी रहते तो क्या फर्क पड़ता। आप इमेजिन करो आपको यहाँ बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है और आप 2 साल कैश में बैठे हुए हैं, क्योंकि आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी रिस्की लग रही है। रिस्की क्यों लग रही है? क्योंकि आप एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से दूर हैं, यहाँ पे ब्रेकआउट्स नहीं मिल रहे हैं, मार्केट की हालत सही नहीं है, पॉजिटिव न्यूज नहीं आ रही है, क्वार्टरली रिजल्ट अच्छे नहीं आ रहे हैं, यानी
अगर आप कन्विंस नहीं हैं तो आपको क्या करना चाहिए, वेट करना चाहिए, क्योंकि सही अपॉर्चुनिटी पे 8-9 साल का रिटर्न आपको 1 साल में मिलने वाला है, 2 साल में मिलने वाला है। तो इसमें यहां इन्वेस्ट करके रिलायंस में 2009 से यहां पे इन्वेस्ट करके इतने सालों तक इसी प्राइस पे बने रहना, दिस इज नॉट एडवाइजेबल, राइट? तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, हम हर नए ट्रेंड के शुरुआत में बाइंग कर सकते हैं। जैसे ये एक साइडवेज ट्रेंड हो गया मेरे लिए, 8-7-8-9 महीने से प्राइस इसी रेंज में था। पहली कैंडल अगर आप देख लें अगस्त में बनी जो हाईएस्ट, सितंबर में, वहां से प्राइसेस अभी वापस से सितंबर आ गया। 1 साल से रिलायंस साइडवेज था, अभी अभी इसने अपने पिछले साल के हाईज को तोड़ा है आज के दिन में, आज टुडे। तो ये एक नए ट्रेंड की स्टार्ट हो सकता है, एग्री? देयर इज अ रिस्क, अगर अब नीचे भी जा सकता है, पूरा महीना पड़ा हुआ है, पर देयर इज अपॉर्चुनिटी। और रिस्क कितना बड़ा है मुझे, अभी जब भी प्राइसेस इसके नीचे चले जाएंगे, जिसके बेसिस पे मैंने बाइंग किया है, वहां पे मैं क्या कर सकता हूँ, एग्जिट कर सकता हूँ, राइट? मैंने ये डिसीजन यहाँ बाइंग का क्यों लिया है? एनीवन, अगर कोई लेता है, आई एम जस्ट सेइंग, मैंने ये डिसीजन इस बेसिस पे लिया, जिस बेसिस पे आप लेते हो डिसीजन, अगर वो ब्रेक कर जाता है तो एग्जिट होता है। तो जब मैं आपसे कह रहा हूं कि ये रेंज आपने सपोर्ट बेसिस देख के लिया 1800 पे, तो आपका रिस्क 400 का है। जब आपने ईएमए बेसिस पे लिया तो आपका रिस्क यहाँ 800 रुपीज का है, क्योंकि आप फार अवे हैं। लेकिन अगर आपने इस बेसिस पे लिया कि 1 ईयर से ये प्राइस इसके रेंज में ही था, अभी अभी रेंज ब्रेकआउट हो गया, जहां मेरा कर्सर है वहां ध्यान दीजिए, अभी तक प्राइसेस इसके नीचे ही थे, तो आपने यहाँ पे डिसीजन अगर 2280 के बेसिस पे लिया, तो आपका अब आपका रिस्क कितना बड़ा हो गया, 100 रुपीज का, राइट? तो इज अगर आपको लगता है कि 100 रुपीज का रिस्क बहुत बड़ा नहीं है, 100 रुपीज फॉर 2300 रुपीज, आपको 3-4% का रिस्क है। और अगर अब यहाँ से निकलता है तो रिलायंस यहाँ जा सकता है, वो आप अपनी स्टडी करोगे, तो इतना रुपए मेरे लिए बेनिफिट प्रॉफिट आ सकता है, उसके अगेंस्ट मेरा 100 रुपीज का रिस्क है। और दोनों तराजू में आप तोलोगे रिस्क एंड रिवॉर्ड के, और अगर आप रीजनेबल लगेगा तो आप इन्वेस्ट करोगे। तो सिर्फ मंथली कैंडल पे यहाँ तक मैंने जो जजमेंट लिया, इस बात को अच्छे से समझिए आप लोग। तो मैं जब मंथली चार्ट आपसे मांग रहा हूं, तो ये सारी चीजें आपको सोचनी है, वही सोचने के लिए मैं आपको ये चार्ट बनाने के लिए कह रहा हूँ। तो जब आप मंथली चार्ट लेते हो तो एक सिंपल लाइन या एक सिंपल एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की तरह नहीं देखना है आपको। आपको देखना है कि मैं कब बाई कर सकता था। आप सोचो, आप यहाँ पे सोचो, अगर आपको मैं बोलूं यहाँ रिलायंस में आप कब इन्वेस्टेड होना चाहते हैं, तो आप इमीडिएट कहते हैं काश मुझे यहाँ पे मौका मिला होता, काश मुझे पता होता टेक्निकल एनालिसिस और मैं यहाँ पे बाई कर रहा होता, काश मैं यहाँ 2017 में बाई कर रहा होता। आप यहाँ तो नहीं कहना है ना कोई, काश मैंने रिलायंस यहाँ बाई किया होता। आप बोलोगे क्या कि काश मैंने रिलायंस यहाँ 2009 में बाई किया होता? तो आप इसी काश को आगे की तरफ लेके चलिए कि ये पीरियड आप क्यों नहीं बाई करते। तो इस पीरियड में जिस वजह से आप नहीं बाई करते, उसी वजह से आपको आगे के पीरियड में भी बाइंग नहीं करनी है। तो ये चीज अपने माइंड में आप बिठाइए कि यहाँ पे आप क्यों बाइंग नहीं करना चाहते। कोई तो रीजन होगा जिसकी वजह से आप यहाँ बाइंग नहीं, क्योंकि अभी तो आपको दिख रहा है कि अगले 9 सालों तक परफॉर्म नहीं किया, लेकिन ये आपको 9 सालों तक नहीं पता था। ये अपने 9 सालों तक यहाँ देख के नहीं बता सकते आप, आगे वाले हो सकता है 20 सालों तक रिलायंस में परफॉर्म करे, हु नोज, राइट? तो आप यहाँ सोचिए, आप यहाँ क्यों इन्वेस्ट नहीं करते, क्या रीजन थी कि यहाँ आप स्टॉक बाई नहीं करते, और बाई करते तो कब निकल जाते। किसी वजह से अगर कोई इंडिकेटर आ रहा है कि यहाँ बाइंग का सिग्नल बन रहा है, तो आप करते तो कब निकल जाते। वही दोनों चीजें ध्यान रखनी है आज के पर्सपेक्टिव में। आज के पर्सपेक्टिव में जब भी आपको बाइंग करना है, आपको इसी हिस्ट्री से लर्न करना है। अब आप हिस्ट्री में पुराने समय में नहीं जा सकते कि आप रिलायंस पे यहाँ बाई कर पाओ, लेकिन अगर आज आपको कोई सिग्नल मिलता है, आप यहाँ बाइंग करते हो, तो हमेशा इस हिस्ट्री को याद रखिए। आप याद रखिए कि यहाँ पीक प्राइस से रिलायंस कितने कितने दिनों में गिर गया, आप यहाँ याद रखिए। तो आप यहाँ से सीखोगे, यहाँ पे बाइंग कर रहे हो, अगर यहाँ पे बाइंग, यहाँ रिस्क है, राइट? अगर मैं यहाँ पे कोई रिलायंस के लिए बाइंग का सिग्नल जनरेट हो रहा है, नहीं हो रहा है, ट्रेंड चलती हुई गाड़ी में कौन घुसेगा, यहाँ हो रहा है। देखिए यहाँ पे ये रेंज था, पहली बार ब्रेकआउट हुआ, यहाँ रिटेस्ट होके यहाँ उठा, यहाँ था, यहाँ पे नहीं था। ये चलती हुई गाड़ी है, राइट? यहाँ कोई इसके बेसिस पे ले सकता है, इसके बेसिस पे ले सकता है, लेकिन अल्टीमेटली अगर ट्रेंड चेंज होगा तो सडनली प्राइसेस कहाँ तक जा सकते हैं, आप यहाँ देखना,
800 से 200, नो मैटर हाउ गुड द कंपनी इज, रिलायंस तब भी मार्केट कैप में नंबर 1 थी, राइट? तो 60-70% का प्राइस इरोजन हो सकता है, आपकी इन्वेस्टमेंट पूरी 70% इन्वेस्टमेंट डाउन हो सकती है। तो जब आप ऐसे पीक पे बाइंग कर रहे हो, उसके अपने रिस्क हैं, उसी रिस्क को मिटिगेट करने के लिए आप ये पूरी टेक्निकल एनालिसिस पार्ट कर रहे हो। तो सोचना शुरू करिए, क्यों यहाँ बाइंग, क्यों मैं यहाँ बाइंग नहीं करना चाहिए? क्या उसी तरह की सिचुएशन आज है क्या? आप सोचिए, क्या हम इसी तरह की सिचुएशन पे हैं क्या? बिल्कुल हो सकते हैं। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से इतनी डिस्टेंस थी, आज भी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से उतनी ही डिस्टेंस है, उससे कम है थोड़ी, पर है, राइट? हम एक चलते हुए ट्रेंड में घुस रहे हैं, जस्ट लाइक हियर। ओनली गुड थिंग इज